Hello and welcome my YouTube family. How are you today? I hope you're all very well. अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत स्पेशल है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो वीडियोस हैं ना वो सेल्फिश ना हो, उनका कंटेंट सेल्फिश ना हो और एटलीस्ट एक ऐसी कोई चीज़ हो जो सब जो है ना उससे सीख सकें। तो आज की वीडियो में अगर आप जो है ना जो मोटी अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो जो चीज़ें हैं आज की वीडियो में वो ये है कि अगर आपको कुदरती मनाज़र से दिलचस्पी है, आपको नेचुरल सीन्स देखने अच्छे लगते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। माय अपॉलॉजीज़, मुझे पता है कि ये वीडियो लंबी है। नॉर्मली मैं इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन आज बनाने की वजह ये है क्योंकि मैंने एक बहुत नाइस जगह को कवर करना है ताकि आपको एक फ्लेवर मिल सके कि ये जगह कैसी है, आपको विज़िट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो है ना अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो इसलिए जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए रिव्यू, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी लंबी वीडियो है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ कि शुरू में सारे नेचुरल सीन्स और इसमें क्या क्या था, कैसी वॉक है, वो सब है। और टुवर्ड्स द एंड जो है ना, जो लोग गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त गार्डनिंग टिप्स हैं, मेरी तरफ से नहीं, जहाँ हम गए थे उनकी तरफ से। तो यू विल हैव ए लवली थिंग दैट यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। अच्छा, ये हम गए जी, एक कम्युनिटी ट्रिप था। हमारा जो कम्युनिटी का एक सर्कल है, हम एक जैसे इंटरेस्ट के जो लोग हैं हु आर इनटू गार्डनिंग और इस तरह की चीज़ों के, तो ये प्लान्ड मतलब विज़िट था और हमारे लिए मतलब ताकि हम सब इकट्ठे एज ए कम्युनिटी जा सकें। हैरोगेट में ये है, इसको कहते हैं एज द टाइटल सेज RHS गार्डन्स हार्लो कार, इस जगह का नाम है। अब इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा इन्होंने वेलकम किया। दो लवली लेडीज़ थी वहाँ पे और इन्होंने हमें बहुत वार्म वेलकम दिया। हम आए, ये सीटिंग एरिया था सारा, इतनी अच्छी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। और ये जो सारे जो हैं ये जो प्लांट्स वगैरह सामने टेबल्स पे पड़े थे, तो उसको देख के ही ना बंदा बड़ा ज़रा लाइवली से फील करता है। और इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी इनके नोटिस बोर्ड्स पे, एज़ यू कैन सी कि इसमें ना डिफरेंट इनके जो है ना लर्निंग मॉड्यूल्स, डिफरेंट लर्निंग वर्कशॉप्स, कोर्सेज़, उनकी डिटेल्स थी कि किस दिन को क्या होगा। और फिर जो है ना हमें सिखाने के लिए कुछ गार्डनिंग टिप्स भी थी और ये उसकी तैयारी थी, यानी कि काइंड ऑफ ए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, तो जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिलेगी। मैं यूजुअली अपने बच्चों की कमिटमेंट्स की वजह से ऐसे ट्रिप्स पे नहीं जा पाती, लेकिन आई मस्ट से कि अगर आप लोग जा सकते हो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो, तो प्लीज़ डू गो ऑन सिमिलर विजिट्स एंड ट्रिप्स। कि एक तो ये कि यू गेट टू नो पीपल, आपको बड़ा अच्छा लगता है। देखें यहाँ पे हम इकट्ठे चाय पी रहे थे। So we've got 12 bits of statements, 12 statements here. What I'd like you to do some point. इन्होंने बड़े मज़े का स्टार्ट लिया। देखिए, इन्होंने 12 रीजंस इधर लिखी हुई थी कि इनमें से आपके यहाँ इस जगह पे आने की क्या वजह है, और उन्होंने साथ लिखा हुआ था, मार्कर दिया था सबको कि आप चूज़ करें, ठीक है। और बेस से हम सीखेंगे कि हम अगली दफ़ा में क्या इंक्लूड करना चाहिए इस ट्रिप में या कोर्स में। और ये कि जी ताकि हमें पता चले कि लोग इस जगह पे किस लिए आते हैं। यहाँ पे देखें जी, उन्होंने स्टार्ट किया, एक बोतल का ढकना हमें दिया कि इसको आप ना स्प्रे बॉटल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इन टेबल्स पे ना टू स्टार्ट विद डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पड़े थे, और उन्होंने हमें सबसे पहले कहा कि आप इसमें से अलहदा करके बताएं कि जी इसमें से सब्जियां कौन सी हैं और फ्रूट कौन से हैं। I think I recognize all of them. Yeah, it looks amazing. And do you know the names of them all? I think so. Okay. Okra, I've seen but I never tried. फिर जिन्होंने हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे के कहा कि आप बताएं कि इसका जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, क्या है। तो ये हमने वो एक्सरसाइज की और उसके बाद बड़ी इन्होंने अच्छी में इंफॉर्मेशन दी। अब ये जहाँ हम आए थे जिस रूम में, वहाँ की खिड़की से व्यू है कितना खूबसूरत, और बड़े मज़े का अच्छा इन्होंने काम किया हुआ था कि ड्राइड जो है ना, जैसे कोन्स, डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना, वो इस तरह करके रखे हुए थे। गिव्स यू एन आइडिया कि आप अपने घर में चाहें ना तो बड़ा अच्छा इसको एज ए डेकोरेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने हमें फिर जी ये भी इंफॉर्मेशन दी कि जी फ्रूट और वेजिटेबल में एक बड़ा तरीका क्या है कि आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं, और वो ये है कि जिस भी चीज़ के अंदर सीड्स होते हैं ना वो फ्रूट होता है, और अदरवाइज जो है ना वो वेजिटेबल्स होती हैं। द ओनली एक्सेप्शन टू द रूल इज़ स्ट्रॉबेरी विच इज़ वेरी डिफरेंट, और उसका जो ग्रुप है फ्रूट्स का उसका नाम ही फ़र्क था। तो जी हम आगे बाहर लर्निंग सेंटर से और हमारी वॉक का आगाज़ हो गया। और उस टाइम उन्होंने दो, मैं कह रही हूँ ना, ये जो दो लेडीज़ हमारे साथ थी ना,
ये इतनी हेल्पफुल थी कि कोई हिसाब नहीं। ये जगह जगह रुक के हमें ना बताती जा रही थी कि अच्छा ये चीज़ कैसे ग्रो करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस थे हमारे जहन में उनको आंसर कर रही थी। एंड में इन्होंने हमें अपने ईमेल्स भी दिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी कि इन केस यू गो होम एंड यू हैव ए क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। अमेजिंग ट्रिप दिस वाज कि जिसको भी गार्डनिंग से ज़रा सा भी शगफ़ है ना, आई थिंक दे मस्ट डू दिस विज़िट। तो फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि आई थिंक हर एक एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, कि आपको फ्लावर्स में इंटरेस्ट है, फ्रूट्स में इंटरेस्ट है, वेजिटेबल्स में। यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। और हम जगह जगह पे रुक के ना अपने हिसाब से चीज़ें पूछते जा रहे थे। हमें कोई, अब यहाँ पे हम जैसे पूछ रहे थे ना, इसको मल्च आई थिंक कहते हैं, ये जो ऊपर ऐसे ये जो लकड़ी की छाल सी होती है ना, दिस इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग, आई हैव रिसेंटली लर्नड। तो ये उसके बारे में बता रही थी। मैंने कहीं कहीं पे वॉइस ओवर नहीं किया था कि आपको ना कुदरत की आवाज़ें भी आ सकेंगी। कितना पीसफुल माहौल था वहाँ पे, ज़बरदस्त। एक लाइब्रेरी भी है लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए। ज़रूर थोड़ा सा टाइम कुदरत के साथ गुजारना चाहिए। जब आप इन पौधों को देखते हैं, इनको स्मेल करते हैं, इनको मूव करते देखते हैं, तो आपको लिटरली ये फील होता है कि आपसे बातें कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ग्रुप चलते जा रहे थे इतने मज़े से, जिसके गार्डन में जो भी मसले थे ना, जैसे कोई स्लोप का इशू है, कोई वाटर का मसला है, कुछ ड्राइनेस का मसला है, सब हम डिस्कस करते जा रहे थे। और जो है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सॉल्यूशंस, और हर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। एंड दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। इस दरख्त को मेरे फोकस करने की वजह ये थी कि दिस इज़ पेपर ट्री। ये इसका सफ़ेद कलर देखें, और इससे मुझे पता चला कि कागज़ बनता है। और अब जो हम गार्डनिंग टिप आपके साथ शेयर करने लगे हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी मेरी तरह नहीं सुनी होगी। Tickle it, and the pollen that's stuck to your finger from the first flower, and then you're transferring it to the next flowers. So you're just acting like a big support. So you might harvest some of these stems and use them to hold your peas up or something like that. If you put them in the ground, they will grow. They'll grow. So you actually have to peel the bark off the bottom of the stem before you put it in the ground to stop it growing. What are they called? Willow. Willow. जब आप इतने बहुत से लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, तो आपको बहुत से नए लोग मिलते भी हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो होते पुराने हैं, लेकिन आपने उनको कभी इस तरह देखा नहीं होता, तो आपको पता नहीं होता कि वो लोग हैं कैसे। तो ऐसे ही एक बंदी से मेरी मुलाकात हुई, और इट मेड दिस एन इवन मोर मेमोरेबल ट्रिप, क्योंकि जो है ना, हमारी अच्छी गपशप हो गई और हमने खूब गप्पे लगाई, और वी शेयर्ड सो मेनी थिंग्स, देयर वर सो मेनी सिमिलैरिटीज़। तो जो है ना, ये भी एक स्पेशल बात थी इस ट्रिप की। और भाई ये दरख्त तो बहुत ही खूबसूरत था। इस तरह लग रहा था कि आर्टिफिशियल ट्री है, लेकिन इट वाज नेचुरली ब्यूटीफुल। चेक इट आउट। Yeah, this is beautiful. How's your well-being up there? That's a good one. That's really good. Look at this beauty. You know, like photos नहीं होते, you know, like you have canvases and ऐसे वो डिजाइन करते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत। ये वीडियो लंबी होने की एक वजह ये भी है कि देयर वाज सो मच टू शो। बोलने से ज़्यादा आई थिंक कि मेरा फोकस ये था कि डिफरेंट एरियाज़ को मैं कैप्चर कर लूँ, जो आप देख सकें कि एक एक पौधा उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है,
और जो है मतलब अगर आप इसके मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहें कि किस सीज़न में ग्रो होता है, कैसे ग्रो करते हैं, क्या ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो लाइब्रेरी में जाके आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। और यहाँ ये जिन बाबा भी मौजूद था। भाई इतनी खूबसूरत जगह पे इस जिन बाबे की क्या तुक थी, लेकिन बस ये था। यूके में ये बातें ख़त्म हैं कि देखें इस ट्री की तरफ से मैसेज लिखा हुआ है कि भाई मैं बहुत ओल्ड हूँ, मेरे साथ चूटे शूटे ना लेना, मैं टूट जाऊँगा, मैं बड़ा जल्दी ज़ख्मी हो जाता हूँ। बंदा हम में से मसरूफ़ था डिफरेंट तरह से इमेजेस और पिक्चर्स लेने में, और फिर यहाँ पे हमने कहा जी ये ग्रुप फ़ोटो बनवा लें, तो वो भी बड़ी मेमोरेबल थी। क्या खूबसूरत ये जगह बनी हुई थी चाय वगैरह पीने के लिए। फिर हम चलते चले गए तो आगे फिर हम ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जहाँ पे ना इन्होंने उसको कह रहे थे कि वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया या वेजिटेबल बेड्स थे वहाँ पे ना, तो रेस्ड बेड्स बने हुए थे जहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो हुई थी। और मेरे लिए ना बड़ा मुझे पसंद है रूबाब। जो जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता है कि खैर इट्स ए फ्रूट या वेजिटेबल, ये एक डिबेट है, लेकिन बेसिकली ये डिज़र्ट्स में यूज़ होती है। तो इसको ग्रो करने का ना बड़ा एक स्पेशल तरीका है। यहाँ पे सिर्फ रूबाब के गार्डन्स भी हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ पे ना उसके साथ अभी मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगी इन द वीडियो, आप साथ साथ ये मनाज़र भी देखते जाएं कि वहाँ बड़े अच्छी ना उसके साथ एक पॉट सा मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था, ठीक है, कि जो स्पेशली यूज़ होता है रुबाब को ग्रो करने के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वी लर्नड एज वी वेंट अलोंग। और जो है ना आई थिंक ये इतनी बड़ी जगह थी और इसमें इतना कुछ था कि हमारा तो हाफ डे का ट्रिप था। तो आई थिंक अगर आपका गार्डनिंग का शौक़ है तो इस जगह पे पूरा दिन लेके आएँ ताकि आप इसको 2 पार्ट्स में देखें। तो ये मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी, क्योंकि वरना फिर आप जल्दी जल्दी में देखते हैं, फिर आप सारे एरियाज़ को कवर नहीं कर सकते। ये था जी इनका चिल्ड्रन कॉर्नर और साथ ही इनकी शॉप थी। मुझे बड़ा अफसोस है मैं दोनों जगहों पर नहीं जा सकी। और ये वो रुबाब के प्लांट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, और ये वो पॉट है जिसकी मैं बात कर रही थी। और टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। एंड वी वर बैक इन द रूम फॉर ए कप ऑफ टी एंड सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। Feel free to talk. I was telling her I've got a YouTube channel. Okay. And I was saying I'll be making videos. यहाँ से जी एक्सपर्ट गार्डनिंग टिप्स शुरू होती हैं। Presser, just to make it level, to make it the same level for my seeds. And then I'm going to try some basil. I'm going to use this seed sower. So usually, you just take a pinch, sprinkle. It's fine, it's not a problem. But you might work with somebody who maybe hasn't got very good dexterity, they can't pick things up. This is a really good tool. You can see where the seeds are going and take your own time. So I probably only want 8 seeds in this. That'll be it. So I guess you can get them probably from the eBays and Yeah, Wilkinson's. Do you have a Wilkinson? Yeah, they're usually really good for gardening stuff. Now, because my seeds are very small, I could take a bit of soil and just shove it on the top. It's not good for the seed, it's too deep. So actually, a little sieve, just to give a fine layer over your seed, so you don't bury them too deep. Okay? That's the basil, and it's exactly the same for the salad, same technique. These are if you're growing at home, just to show you, you might want to use, make your own little greenhouse. You can buy, this is a fruit punnet, so you can put that over a seed tray. And if you're growing on a windowsill, quite often things lean towards the light. You can put a mirrored background, just kitchen foil, that's all it is. And it just stops them. So you don't have to keep turning them all the time. Still a little bit of turning, but much easier with something like that.
Then we've got these, which are called coir pellets. So this material is equivalent to compost, but it's made from a coconut husk, the outside of the coconut. So it's coir. So it's come from a long way away. Are they not quite expensive, these ones? Yes and no. They're not overly expensive, I don't think. And as a stock item to keep in a cupboard, means you don't have to lug a big bag of compost around. So I got them from a garden centre, so they came in like a pack of 20s. Yeah. But with these, you just add water and they rehydrate. They've got a little net bag on the outside, so the roots can grow out. And for this one, I thought you could either plant a courgette or a sunflower, because these are a good one to do a big one seed. So, And after you can just plant. yeah. So you pop it in, cover it over. Once it's growing, you plant the whole thing. Easy. Oh, including this, yeah. Yeah, the whole thing. Straight in. Then I've got two slightly more specialist techniques which you might want to practice. You don't have to do that today. I've got a different kind of pot for you. This is another sustainable alternative. This is made This of as like... well you can plant after all. Yeah, same thing. Sorry, the other thing I struggle with these pots is like they dry out very quickly. Yeah. And So these ones, if you touch the pot, you'll feel it. It is really delicate. So literally, you don't want to handle it. Once it's planted, you leave it. But these ones are pretty robust. You can see his little, you see his roots coming out? Start to grow through. And it holds a lot of water. Like, I have the opposite problem, i.e. these get too wet and drown things. So I'd recommend those if you're having a problem with drying out. And the other thing is to stand them in a tray. I've got some empty trays under here, but just put them next to each other. Yeah, so that they're all together. So as they lose water, it passes to the next plant. Ah, okay. So we're going to fill this up. And there's two different things you can do here. You can either pot on, so you're getting an individual plant and you're putting it into the pot. So my pot's a little bit full. So why are you taking it out from there into there? So it can grow bigger. Oh, So at this point I could plant it in the garden. This is a parsley plant. It's fine to go outside now. But what I want to do is throw them on a little bit bigger, and then I'm going to plant the whole pot. So the pot will biodegrade. The roots will start growing out of it like that. So that's called potting on. We've also got a technique here called pricking out, which you're welcome to have a go at. I'll use one of these just because it's easier, but either pot will do. So what we're going to do is we're going to take an individual plant, move it into its own container. So I'm going to dig it out, hold it by a leaf, because if I hold it by its stem and I crush the stem, I kill the whole plant. Whereas if this plant loses a leaf, it's not the end of the world. It can grow a new leaf. So there's my little plant, and I want to plant it into here. So I made a hole, took its little roots in. I mean, it'd be okay, you know, a lot of these vegetable seedlings, you can go quite deep. Yes, Yeah, it should be yeah. fine. So like this one's quite a nice example. So my lettuce was getting a bit leggy, so I used the thing, but it hadn't really worked. This one I planted with the stem exposed, and it's okay, but it's a bit wobbly. This one I planted really deep. So where that first pair of seed leaves, the first leaves that come out, you can plant all of that stem under the ground to give you a stronger plant. So especially with tomatoes, that's where people always say that tomatoes do. So that's a good sign. And then our final test. Can you just do the same? Yeah, you can drop your chilies. Yeah, I've just done mine at home because they've gone a bit leggy as well. So what we're going to do, oh, I did get some out. We're going to take some cuttings now. So we're going to make a brand new plant for free from these plants. So these are mint plants that I've just got from the supermarket. They're like £1.25.
There's nothing wrong with them, but they're not really meant to grow year after year after year. They're literally harvest it all, eat it, and throw the plant away. So these are the ones that I've been growing at home, a bit more sustainably. So you'll find there's probably less stems in these. They're in a heavier compost as well, so they're in a compost that's going to last a bit longer. And I've actually brought in different flavours for you. So we've got a strawberry one, an orange one, chocolate, and chocolate. So just to show you, there's lots of different flavours of mint. But this is the easiest thing in the world. So let's say I want to do 3 cuttings, make 3 little holes in the pot. Just check that the actual stuff is level. It's a jelly inside. Oh, I thought it was water. I thought it was water. Yeah. So you buy that then? Yeah. So it's a company in Sheffield that makes it actually, and it's a clay-based product, so it's completely biodegradable. It looks, horribly man-made, but it isn't apparently. But there's no name on it. How do I buy it? It'll be on the boxes. Oh, okay. So yeah, you need that. That's the name of it. So when it comes to taking a cutting, That's something new I'm learning. what you want to do is cut just below a pair of leaves. So don't cut in the middle of the stem, cut just below the leaves. Like that. Yeah. Because all the chemicals in here to make it decide, is it going to be a stem, is it going to be a leaf, is it going to be a root, they're all in those points. There's not really very many hormones or chemicals here. Yeah, it smells really I'm going to be nice. really mean, and I'm going to take nearly all of the leaves Make the off. chutney, yeah. Because it loses so much water, it'll go wilty too quick. So we're taking off some. I might even take the lid off. Leaves. Yeah, I can even cut a leaf in half. So anything to stop it losing water, because that's what will kill it. And then make sure that you've got at least 2 nodes, so where the leaves were growing from, 2 points. That's 2 chances to get roots to grow. And then just push it in as deep as it'll go. Keep it on a windowsill. In 2 weeks, you'll have a new plant. I've done it in water, Yeah, exactly the same. but not the jelly. So you can take it home. Because if I gave you a cup with water in it, with a plant in it, you'd be like, what am I going to do with this? So I use the jelly, but water works just as well. And quite a few different plants will root in water. And do you have to have the same in all these 3 holes, or No, can you have different? ones. So what I was going to do was label it up. So I got this one, wasn't it? Is that chocolate? Is this the orange mint? Yeah, it smells Orange. like orange. Yeah. So this is orange mint. And so I could have different ones there and just make sure you put the names on them. Is that yours? बहुत लोगों को गिफ्ट करने हैं, अच्छा. Sometimes in the stock though, but it's cheaper to go online and buy like 200. ये देखो मेरे हस्बैंड चोरी करते हुए. भाई फिर उसके बाद हमने ये केक्स और टी पी, और ये बैटीज़ की थी. और भाई ये ज़बरदस्त. अगर आप चाहते हैं ना कि कोई सही टॉप क्वालिटी आप डिनर डिज़र्ट्स खाएं, केक्स और टी हो, तो डू ट्राई इट आउट. अच्छा, इनका पूरी एक जो है ना वो शॉप कह लें वहाँ पे है. अगेन हम वहाँ पे भी नहीं जा सके, लेकिन अपेरेंटली देयर वाज अ लॉन्ग क्यू. कहते हैं कि जी खुशियों के टाइम जो है ना वो जल्दी गुजर जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चला हमारा ये जो है ना एक जो है ना 3/4 ऑफ अ डे कैसे गुजर गया. और जो है ना सून वी वर बैक इन आवर वैन, और जो है ना वी वर ट्रैवलिंग बैक जो है ना. और इतनी अच्छी मेमोरीज हम लेके आए. आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में देखना पसंद है या नहीं है, और ये कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.